Hello everyone, good morning. Morning, sir. Okay, hope you have revised all the topics that we have covered in previous session. So before going to start a new session on post-based monitoring and troubleshooting part, that is basic steps, but I think we have to revise some topics that we had already covered in previous session. So please let me know if you have any doubt, any questions on previous sessions. Anyone? Okay, I think everyone good. Good now. Then we can start from monitoring Postgres as well as the Linux box or Ubuntu box. So, my screen visible for all of you? Are you able to see my screen? No, sir. No, sir. Okay, hold a minute. Now, Yes, sir. okay. So, before going forward, I would like to say something. Being a developer or DBA, we should have to monitor OS level as well as the application level. So it is a couple of things that depend on the operating system because any rdbms is not a standalone platform. You can say that is depend on the OS platform and the hardware that is assembled to the server. So for the troubleshooting part as well as the monitoring point, we have to think from the aspect like the hardware, network, software, and then the rdbms. What are the applications we are using? So monitoring is very simply easy task, but the way to monitor is very difficult because we have to think from all the perspectives like hardware, network, and software. So we have to keep a strategy or plan in our mind how we are going to monitor our application. As you know, we are developing an application to monitoring applications. So we are, yeah. So we think, please keep on mute. I think, yeah. So we have to think like a layman that we can say that a non-technical guys. If we are providing some reports, if we are providing some details or data to the end user, we need to create as a simple language stated or in the layman term because we don't know the guys who are asking for any reports is a technical or non-technical. So each and every topic should be explained in detail so that the end user can read that document and analyze that what are the performance of the system, how the server is performing, where is the lag, where we need to improve our software and application, how we are going to approach to maintain these other systems and applications. So that is a strategy, and many of the people don't have such knowledge like just they think that just open a GUI and go to the monitoring tool and view that the things and take the report and send to the end user. But we have to elaborate at the topics. These are the critical facts. These are the warnings. These are the we can say that errors. So today we are going to see how we can monitor or troubleshooting the basic steps for the Postgres as well as Ubuntu or Linux platform. So
I have a server. Yeah, this is a test server, and this is only for testing purpose. So before going to monitor OS level monitoring, we need some couple of keywords like that stop, top, and we can set iOS stats, stream. So we'll see today the first Windows monitoring keywords. I think today the font of the code is increased, and I have done for 18. So I think today is visible. The first command is stop. So that is a Linux tool that will display all the hardware utilization and application utilization on the server, what the exe is running, which speed is working, and what the command is fired. So basically we are working on both ways. So we have to pass that username, that is desktop-u username. We can pass root, we can pass the Oracle, what the user we have on the server. So basically every application on Linux box is the owner of that user is same as application name and is the owner of that application, you can say. So we have a Postgres. So we are just monitoring what the Postgres is doing on the server, and the Postgres user is performing what type of activities. So I have passed here stop-u Postgres and hit enter. So we see that here the feed ID that is generated by each and every transaction, username Postgres, print that is for printing session, that is display, and that is a virtual memory, that is we can see that the allocation memory to the server, that is a cache memory. This reference memory that is allocated to the server, shared buffer that is here, and the status of that command that is in S in the slip, R means running, D matlab dead. There is some CPU utilization percentage, in memory in percentage, time from the connectivity to the server while the user connect with the server until it is live. So that is the total time. So we can say elapsed time on the server, and the command fired by the end user. This is the first display for the server monitoring. Here is the processor count 1, 2, 3, and 4. There are 4 logical processors on the server. That is the memory utilization details. We have a 16 GB of memory, and we are using 7.4. I think 7.74. Yeah. And next is the swap memory. It is allocated 1 GB approx, and it is using approx 3 MB. This is the time and task counts, thread counts, and every load. And this is the time for the uptime of the server. Last 12 hours. Before 12 hours it is restarted. So that is time showing that is 12.22. That is 12 hours, 22 minutes and 58 seconds. Next is free. So free means that is display the RAM, but we have a keyword like MGH. So M means megabyte, G matlab gigabyte, H means human readable. So we have to pass that parameter. We are going to see that the free memory or total memory on the server in gigabyte. So we pass G. So total memory is 15 GB, utilize 7 GB, free is 3 GB, and buffer and cache is 4 GB, and your level 3 is 7 GB. And swap memory is 0 because we have less than 1 GB. So that is converted into 0. If we pass here M, so it will display in the megabyte. So see here, the total swap memory is 975 MB. So we have to pass an argument after any command to change the display of, and we can say that unit of that hardware. Next is iOS stat, iOS off. So this is for IO means read write. So read write byte per second, read write megabyte per second, kilobyte per second. That will depend on the speed of and the you can say the memory and CPU.
So this is the total display, total read write per second, byte per second, and average or actual we can say. That is by users, which users, how many writing this data on the disk via which command, or we can say that application. We can get here the details for iOS stats. Next, how can we check the services on the Postgres? So, on Ubuntu and Linux work. So we have to many commands, more than 9 or 10 commands. You can check that initdb, services, systemctl. So many commands we have. So first we go through that PPT first. So this is a PPT for monitoring Postgres. So the agenda of that this session is the background processes. What are the background processes the Postgres have? How can we restart, stop, and check the status of the services of Postgres? What are the PG catalogs? That is a system tables or system views that collect the statistics of the tables and users and the activities performed by the end user. System views, statistics controller collector. We can say how to monitor that Postgres via CLI, that is command line interface. We can also see monitor from GUI, that is PG admin, or different type of tools. System database, what we have in Postgres by default, that is the Postgres template 1 and template 0. And we see some basic Linux command and the front end tool like we can say PG, what are the front-end command that is, we can say PG admin, PG pool, and many more. So the background processes. There are 6 background processes in Postgres like logger, writer, wall writer, checkpointer, auto vacuum, archiver, and a statistics controller, collector. So all background processes have a different role on the databases to collect all the information belongs to their job, their task, and they write the data into that system views in memory. So logger can log all the error logs in a log file, that is PG log file. Writer that writes dirty buffer files directly into disk. That is, we can say when we modify some data that is in memory, and after that is written into disk by writer. You can say PG writer. Next is the wall writer. That is write all the buffer log, that is for we can say if we have enabled archival mode or standby mode, so that will monitor all the logs and write on the disk as well as the secondary servers. Checkpointer is a service which fires directly for the depend on the recovery or retention period of the server and write data to disk or file. Auto vacuum launcher, that is we can say it is a maintenance task for databases. So it is launched by the system automatically when it's needed because it is monitoring continuous the databases and check the bolting tables and any damaged files and case corruption. It will try to repair that file and it runs regularly. So we need that memory for it. That is, we can say that the maintenance worker memory that will be used by that auto vacuum launcher. Next is archiver. That is archive log mode. That is for we can previously say that this is for secondary servers like we have our DR solution or Hibernate. So that will work on that. They can archive it can archive all the files and keep archive file on different location that is defined by the end user. The statistics collector, that is a dbms uses. That is, we can say the how we are to read or write data into disk and the index of data. So that is collect all the information while writing while the agent is writing the data. So the index pages and the database pages, all the details, the structure, we can say that the virtual structure reside in that statics. Next is the services. So yeah. सर एक WL फाइल बताना. WL file, that is
that is WL file is write ahead log. The full form of that val is that is write ahead log, means that if an end user doing some crude operation on the table, that is logging to the log and it is written to the disk after the check pointer fire, or we can say the legislator fire. So that is a type of log. We can say the transactional log, the transaction made by the end user on the databases, that is logged in that val file. Hope you understand, I think. Yeah, okay, sir. Yeah. So next is the services. So what are the services in Postgres? So every application have their own services to run their agent, and that should be in we can say it automatic enable mode. When you restart the server automatically restart all the services of that application. Sorry. So it allows to connection to specify application. If the service is down, we are not able to connect with the databases. So every rdbms have different type of services that should be in running mode, running state, or online state. So that will allow us to connect with the databases. If this is service is down, we are not able to connect with the databases. So we get a message like service refusing to connect, or we are not finding that port or these services. And we can say the service is down, please check the services of the application. These are things. So in Linux, we have a postgres.service name for the Postgres. So this is a name that is registered in that Linux box in daemon. So while we are going to check the status of the services, we have to pass this name. It's the default name for Postgres service. So here is a various way how can we check the status of the services, and how can we restart or check that the state of that rdbms or application. So we can fire first the systemctl list unit of and grab that Postgres. We can pass Oracle, we can pass other application as well. So it will provide a list of the services owned by that application. So just take a demo for it. So I pass here systemctl list units grep Postgres. So it is provided the list of the services like postgres.service, and at the version name and the cluster name, that is Postgres cluster 9.5 along with the version. So all are in running state. So this is the cluster. If cluster is down, we are not able to connect with that rdbms. This is Postgres. Next is how can we check the status of the Postgres services or other applications. So we have to pass the command like service Postgres and status. We can also restart and stop. So this is the output here. The service is Postgres rdbms loaded and active. The feed assigned to that service is 6994. It is active mode, and the group service name, and we can say the status is starting and started mode. There is two mode here for the system, and we can also see that the time that is 12 hours ago. So every application has their services. So while monitoring or checking the service, we have to pass this type of command, that is service and the application name, and then we can say the status or restart or stop, or we can say that disable or enable. We can also do that if it is not required, so we can disable that service. Next is init.d. It is also a command. Systemctl you can also use. Next is we have TG's ls cluster. So it lists out all the clusters installed on the server. If we have a instance or we have a Linux box and we have installed multiple Postgres or multiple MySQL and Oracle, so we can check that from that ls cluster, or we have to pass. Or this is the command for only
we can check PG clusters, how many PG clusters are running on the server. So we have to pass PG underscore ls clusters. So it will show all the clusters running, or we can say stop mode or down mode on the servers. So it will list out all the servers cluster. That is for Postgres only. Next is how can we check that the cluster is running or not. So we have a command type pg underscore ctl cluster and then a version name and the main. Main is the default cluster name. So we can modify that while installing. We can name as per our naming convention, or we can keep default. But here all the server is running on default settings. Okay. So that is a command, that is pg underscore ctl cluster, and 9.5 is the version name, and the main, that is the cluster name. So we can pass here and we can check, and it will provide us the feed that is allocated to application, and that the directory we have, that is the data directory and log directory as well. So we get that details, and if we are not getting the details properly, means that there is something changed and pg is not always able to read that file, so that system is not getting up. So here in our environment, this is a big mistake, we can say that, and every time in couple of days we face this issue. So everyone forget that to check that the file, because the end user going to change Postgres cluster file in a directory, and they change the permission of the file from the Postgres to end user. That's why the Postgres cluster unable to load. So they always miss that the situation, and they are not able to find out the issues why it is happening. So keep in mind that if anyone has changed the config file or the log file permissions, directory permission, Postgres will not start. So that is a human error. So we have to think always before going to change anything in the config file, any directory of the Postgres. Next. Sir? Yeah. So यहाँ पे क्लस्टर जो है, तो लाइक ये अभी सर्वर क्लस्टर है, Yes. या हम लिनक्स क्लस्टर की बात कर रहे हैं? नहीं, Linux is a different thing. In any application, OS platform is different. Okay, in Windows, there is a platform. Sorry? तो सर ये सर्वर क्लस्टर होगा ना? That is PG server. That is for Postgres only. That is dedicated to application only, not for Linux. Okay. Yeah. Because we have a multiple OS platform. So that cluster name should be remain as the default use. So in every OS level, it is the PG cluster, version name and the main. It does not depend on the OS level. Next is PG catalog and system catalog. Now this is found in any rdbms, because the metadata, we can say that they're stored by that army rdbms. So PG catalog is a standard Postgres metadata and core schema. So that store all the system related tables and functions and procedures, which allow us to work on the databases. It is a place where relation databases manage or store schema metadata. That is default, because we know that the metadata is just a structure and keeping the system related data only. So it is the internal schema to manage or monitor the Postgres and other databases on the server. So totally we have an 81 PG catalog in 9.5, and in 9.6 and 10 it is increasing, because they have added more features. When we have more features, we have more catalog views, because we have to monitor and manage all the features via this PG catalogs. So these are the default PG catalogs we have. So you can go through it, because we cannot touch each and every year. There are the PG log and PG indexes, PG tables. So that is a class that is frequently used. Next is system view. In addition to system catalog, Postgres provides us a number of inbuilt views. Means that is the data in the memory. So that is for, we can say, the statistics for monitoring the databases, the end user performance activities. We can monitor from system views. So there are total 24 system views in Postgres till 9.5. So these are the system views, like we can say PG role, PG user, PG stats, PG tables,
PG user, PG views, PG user mapping. So as per their name, they work like that. That is PG log, that is provide us the detail of logs. PG indexes that provide us the details of all the indexes on the databases. PG, you can say PG file settings that provide the server level configuration of file settings that I've already told you, that is the Postgres server configuration detail reside in Postgres config file. So we can see from file as well as table. So the table name is pg underscore file underscore settings. Next is a static collector. That is a subset within the subsystem of any rdbms that collect all the activities performed by the end user and the data written to the disk or memory that is monitored by that. You can say that a static collector that is collect all the information while end user is doing good operations. So we can say that is for altering or modifying or updating the data, the databases. So all the details monitored by that static collector. That is a before we can say background processes of Postgres. So here is some default PG catalogs that we use frequently in monitoring, that is PG stats activity. So it will provide us all the activities performed by the end user that is active or in ideal. Okay. So we are the end user, that is a feed or database name, that is a query name, the time elapsed to the activities we get from that PG stats activities. PG stats application, it will provide the detail about the replication, we can say the slot name, the data transfer rate, and these other things, because this is a part of replication. So I think we don't have any replication right now in our environment. So that we are not using, just we are creating for that client only. And that is next is the stat for WAL receiver. So that is for secondary part, that is secondary server. When the secondary server receive all the replicated WAL files, so that will that will receive the counts and provide the acknowledgement. Next is that the set of subscriber. So we have a primary server, a secondary server. So when we create any replication, we have a publisher and subscriber. So that will provide us the subscriber details, the number of rows written to the secondary database, and how the work is working, and what are the latencies, and we have the, you can say that the log in that queue. Next is the state of SSL. If we have an SSL certificate created for any connections, or we have encryption of databases, so that will provide the status of the all SSL certificates. Next is the progress of vacuum. So vacuum is a process, background process, which is used for maintaining the voltage table and indexes. That is for the maintenance activity. So we get the status of the vacuum when last executed and how many times it is elapsed to the database for database maintenance. So these are the steps for monitoring. And there are different other views and a stat collector, that is if we have a PG underscore stat, that is a stat collector view. So many we have, that is BG writer, database stats. So database stats provide us the database details like database name, rows, the size, and that state of the database, that is online, offline, or suspected, on is recovery, or corrupted. So we have a multiple stats that is provided by the Postgres. So just keep in practice, and that is a read-only table. So you can just get the data only. Select a statement. You cannot update, delete, or insert in that table because it's a view. So the system default databases are, that is Postgres, that is the database engine databases, template 1 and template 0. That is just a template, we can say the model. You know about the model. Model is just a structure of that, we can say that structure, only the structure. While we create any databases, that will follow this structure. The data file size, the growth rate, we can say that the state of the databases. Just copy that template 1 and template 0 when you create a new databases on the server. This is the template only. And the Postgres database, which the database engine database, that will
have all the information of the instance, and it will collect all the information of end user or user databases, the activities performed by the end user, all the details we can find from the Postgres database. So we are before going forward, please let me know, do you have any question on databases and that we can say services and system catalog? Anyone please? Okay. I think Hello. yeah. Hello. So can you please explain why short memory is used? Which memory? Short memory. Yeah. Swap memory is a reserve memory. We can say that is for performance boosting if the physical memory is going down and the server is running out of memory. So that point of time, it will use the swap memory to complete that task. So if you found anywhere the swap memory is charging 100%, means that there is a memory leak on the server. This is a part of performance only. That will provide by that we can see OS level. So in Microsoft we have a virtual memory, we can say lock precision memory, or in the Linux we have a swap memory. So that is of benefit for any rdbms. While creating a new environment, we have to think also about the swap memory. So the criteria to provide a swap memory to the server is, I think, the 10% of minimum the 10% of total physical memory. It is a good practice. So if we are not finding any swap memory in the server, please ask to infra, just allocate some memory, swap memory to the server, because it will boost your performance of application as well as databases. Hope you understand, I think. Yes, sir. Yeah, anyone please? Okay. So I have a couple of questions till now. I think you should have to ask, but you are not asking, so I am going to ask that question. If we are going to create a database, which template used by that database engine? Anyone have idea? If I am going to create a database like XYZ, so which template used by database engine to create a new database? I think you have completed 4 years of engineering, I think, and then you come to this company. So I think you have some logical platform to ask a question. I think you are not in a satsang or temple. Because if you are not asking a question, means that you are not understanding properly. Because each and every topic have behind a multiple question. Why any application is running on this type of services? Because you are going to develop some services, I think. You are a developer, so you have to write some services for messaging services, email services, or we can say that data fetching services. So I think you have to think about that perspective. If any service is running on the server, how they are calling each and other, integrated with each other. So you should ask some question, I think, but you are not asking, and only couple of people are active. I feel that couple of people are active to learn that topic, because I provide this topic. We can say that I have to fight with the management simply, because management is not going to provide you this training. This is not recommended to AAC. This is my recommendation. I have follow up with the management, and then I am providing this
support, or we can say KT process or training process. No company provide any session on databases. No any company in India and our world also. They only think we have a team. They have to work hard. They have to learn themselves and then start coding and then monitoring and managing, providing support and application. But I am doing hard to reduce my task because I feel that in couple of years that due to human error, the bugs are coming to me and this is killing my time simply. So I don't think in future I face that same issues and you are doing wrong thing and then come to me and facing this type of issues. What can I do? So I think you all are from North India and South India. May I know? Are you all comfortable with English or Hindi? ठीक है। इतना मैंने लेक्चर दे दिया तो मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ लैक है तो मुझे हिंदी में बोलना चाहिए। जैसे कि मैं भी ट्राई कर रहा था कुछ बोलने का ही, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ट्रेनर, बट मैंने कोशिश किया कि शायद मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि कल मैं जो डॉक्यूमेंट देखा, इतना बोलने के बाद भी 2 डॉक्यूमेंट में सेम गलतियां थी। तो हमने ये बोला था कि लूप बैक एड्रेस is 127.0.0.1, but no one heard that word. I think in document they have put the wrong data. तो मेरा एक ही चीज कहना है, अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो बहुत ही मेहनत किया मैंने। ऐसे अचानक कुछ भी नहीं मिल जाता है, और जो स्ट्रगल आज से 10 साल पहले था ना, आप लोगों को उसका आभास भी नहीं होगा। 10 साल के 11 साल मान के चलो आप, क्योंकि किसी भी ना फ्रेशर को, कॉलेज के बंदे को कोई भी नौकरी नहीं देता था विदाउट कैंपस। कैंपस में हो गया तो आप महान हो, लेकिन कैंपस में होने के बाद भी बहुत सारे कंडीशन रहते। आपको इतना इजी से मिल गया सब कुछ, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मुझे लगता है कि आपसे मैं थोड़ा सा सीनियर हूँ, तो आपको थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और शायद आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए, तो दैट इज गुड फॉर मी। तो मैं आपको ये सोचता हूँ कि आप मेरे से छोटे हैं, हो सकती है आपसे गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां होंगी तो बार बार नहीं होनी चाहिए। गलतियों से इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। और जो पिछले बंदे जो आए थे उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, आज भी मेरे कॉल पे आते हैं तो बहुत सारी गलतियां, उन्होंने एक्टिवनेस दिखाया ही नहीं। आज भी वो हर चीज के दूसरे पे डिपेंडेंट है कि आप मुझे करके दे दो, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला। अरे भाई नहीं मिला तो यू हैव टू अप्रोच ना कि भैया हाउ कैन आई गेट द डॉक्यूमेंट। वो भी नहीं करते हैं, बस ऑफिस आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, अटेंडेंस बन गया, बॉस को बोल दिया कि भैया हमने ये काम खत्म हो गया, मेल डाल दिया है, फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन भाई आप अपने आप से क्या कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ के बारे में क्या सोचो। अगर आप एप्लीकेशन सपोर्ट में जा रहे हो तो क्या आपके पास एप्लीकेशन सपोर्ट की डॉक्यूमेंट है, हाउ टू फॉलो द स्टेप टू फॉर ट्रबल शूटिंग, या फिर आप डेवलपमेंट करने जा रहे हो तो प्रीवियस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर आपके पास है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है कि कैसे क्वेरी फायर हो रही है या कैसे फ्लो हो रही है उसका। अभी भी आपको 3-4 महीने से ट्रेनिंग मिल रही है, किसी ने नहीं पूछा कि अगर मैं डीडीआर में काम कर रहा हूँ या मॉनिटरिंग में काम कर रहा हूँ या डैशबोर्ड में काम कर रहा हूँ, तो जो एप्लीकेशन पहले से बनी हुई उसका फ्लो चार्ट क्या है, डायग्राम क्या है, क्या आपको मिला है सब चीजें। अगर आपको नहीं मिला है तो आप सपोर्ट कैसे करोगे, या फिर उससे कोडिंग कैसे करोगे, या फिर प्रोग्राम सपोर्ट कैसे करोगे। तो मैंने ये सेशन इसीलिए रखा है कि आपको मैं पूरा प्रोसेस का कुछ इंटरफेस दिखा दूं जिसमें आप गलतियां ना करें, जो आज तक लोगों ने करते आया है, तो जिससे मेरा वर्कलोड कम हो। कम से कम मैं थोड़ा फ्री हूँ तो डिफरेंट टास्क में मैं अपना टाइम यूटिलाइज करूँ। तो थोड़ा आप ध्यान रखिए, कहीं नहीं मिलता है ट्रेनिंग,
फ्री में होगी, और खासकर तो डेटा उसको तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि फिर जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है लाखों और करोड़ों में आती है, कोई कंपनी कराना नहीं चाहता। और मैं जहां भी रहा हूँ, मैं बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे जूनियर्स आए हैं ना, उनको आगे तकलीफ ना हो, इसलिए मैं हर कंपनी में ट्रेनिंग दिया आज तक। अगर आप मेरा प्रोफाइल उठा के देखोगे लिंक्डइन पे या कहीं भी फेसबुक पे, आपको 10 बंदे ऐसे मिलेंगे जो मैंने ट्रेनिंग दिया है। और इसलिए ट्रेनिंग नहीं दिया है कि उनको फायदा होगा, मैंने ट्रेनिंग इसलिए दिया कि मुझे फायदा होगा, कि मेरे पास ज्यादा कॉल्स नहीं आएंगे, लोग मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो मेरा टाइम बचेगा तो मैं वो कहीं और यूटिलाइज करूंगा, दूसरा कुछ सीखने में और R&D करने में लगाऊंगा। आज के टाइम पे मोस्टली हर RDBS में काम करता हूँ, चाहे ओरेकल हो या MySQL हो या postgresql हो, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी है। आज के टाइम में इतने एक्सपर्ट नहीं मिलने वाले, आप देखोगे तो या तो कोई बंदा ओरेकल पे काम कर रहा है, उसी पे खुश है, वो MySQL पे हाथ भी नहीं डालता है, नहीं postgres पे डालता है, क्योंकि वो ओरेकल में उतनी सैलरी मिल रही है, सर्टिफाइड विद दैट कि भाई यही मेरी लाइफ है, बस इससे आगे मुझे कुछ सोचना नहीं है। आप अभी करियर स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, और जो भी चीज नहीं समझ में आती है प्लीज पूछने की कोशिश करो। पूछने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, और IT में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, इस बात को आप मान के चलो। अगर लगता है कि मेरा मैनेजर मुझे नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं आता है, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। तो ऐसा नेगेटिव किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। IT में कोई एक्सपर्ट नहीं है, एवरी डे कुछ न कुछ लर्निंग रहती है सब लोगों के लिए। IT में हो सकता है जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसमें से कुछ नया चीजें मार्केट में आ गई, मुझे पता ही नहीं है, आप गूगल करोगे या फिर साइट पे जाओ, वहां सब कुछ और टॉपिक मिल जाएगी। मतलब एवरी डे वी आर लर्निंग। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया IT में ना, तो आई प्रॉमिस कि भाई दूसरी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि पूरे कैरियर में मैंने 15 कंपनी चेंज किया, और हर कंपनी में मैंने देखा है क्या बेनिफिट और क्या लॉस है, लेकिन मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। कंपनी छोड़ने का मल्टीपल कारण हो सकते हैं, लेकिन अपना जो काम है, हमारा जो रोल है, बीइंग अ DBA, बीइंग अ डेवलपर, वो मैंने कभी भी नहीं छोड़ी, और प्रॉपर ईमानदारी के साथ काम। तो मैं आशा करता हूँ कि सामने वाला भी उतनी ईमानदारी से मेरे साथ पेश करे। ऐसा नहीं कि मैं 100% एफर्ट लगाऊं और वो 5 और 10% पे लगा रहे, उसने एफर्ट लगाया नहीं और बग ला के मेरे से पटक दिया कि भाई आप रिजल्ट तो मुझे दे दो। तो एक इंसान हर चीज नहीं कर सकता है, इसलिए ऑफिस में डिपार्टमेंट है हमारे पास। नेटवर्क टीम का अलग काम है, विंडोज टीम का अलग काम है, डेवलपमेंट का अलग काम है, सपोर्ट का अलग काम है। तो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफाइल। अगर हम AC हैं, अभी हम लर्निंग में हैं, तो जितना क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं उतना पूछेंगे यार, शर्म आने की चीज ही नहीं इसमें। जो भी ये नहीं है तो पूछो यार, गलती थोड़ी है। नहीं जानने में, नहीं आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं जानने की जो इच्छा नहीं रखता है ना, उसमें बुराई है। क्योंकि बहुत लोग शर्माते हैं यार, एक यार पूछने क्यों जाऊँ किसी के पास, मैं खुद ही गूगल करके पढ़ लूंगा और कर लूंगा। भाई अगर सब लोग गूगल करके ही पढ़ लेते और समझ लेते तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट NIT और KPS कैडॉक्स सब नहीं रहती मार्केट में, एफेक्ट नहीं रहती, सब लोग ऐसे ही कर लेता है ना यार। तो प्लीज जो भी आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन पूछ करो, शर्माने की जरूरत ही नहीं है। इसमें बेइज्जती नहीं होने वाली है कि भैया मुझे नहीं आता है, और मुझे बहुत कुछ नहीं आता है यार, मुझे रोज पढ़ना ही पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है टीम में। तो किसी को भी भाई IT में तो कोई परफेक्ट है ही नहीं। कोई कहे कि मुझे लिनक्स में पूरी तरह से आता है, एडमिन हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, और एक एडमिन दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम आती है तो सबकी फटती है, उस टाइम में नहीं हो पाता है काम। तो जितने भी मैंने टॉपिक टच किए हैं ना, ये सब बेसिक है। अगर आपको ये सब बेसिक आएंगी तो आगे आप बहुत स्मूथली काम करोगे। अगर नहीं आएंगी तो आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे और उसके पीछे पीछे घूमते रहोगे, आप मुझे करके दे दो और आप मुझे करके दे दो। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिसको बोलते हैं चाटुकार लोग, या फिर बटरी करना, जैसे भी मतलब बहुत सारे वर्ड्स है मार्केट में, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया और नहीं मुझे पता है। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हमें सिखाया गया है, हमने जो सीखा है, और मार्केट के हिसाब से जो पुट करना है वो अपने एफर्ट पुट करें। तो जो भी हमने टॉपिक आपको शेयर किया है, जो PPT हमने शेयर किया है, आप उसको पढ़िए, देखिए। नहीं होता तो हमने ग्रुप बनाया अलग से, इसीलिए ग्रुप बनाया कि आपको हो सकता है उस ग्रुप में मैनेजर्स हैं, PL आपके हैं, तो शर्म आएगी।
आप मुझे 1 to 1 मत पिंग करो, मैं सब लोग को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे कंपनी के लोग मुझे पिंग करते हैं, तो सबको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ। तो इस ग्रुप में आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, जो भी हो, आपको शर्माने की जरूरत ही नहीं है यार। अगर आप फ्रेंड्स की तरह बिहेव करोगे ना तो बहुत आगे ग्रो करोगे। अब लगो कि मेरी ये मेरा बॉस है और मैं जूनियर हूँ, तो आई थिंक ये जिंदगी भर बना रहेगा। फिर तो अंग्रेज भी यही काम किए थे और हम भी यही करेंगे, नॉट अ गुड वे आई थिंक। तो बी अ फ्रेंड, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे सामने रखिए डेटाबेस रिलेटेड, बिकॉज आई एम नॉट अ डेवलपर। ठीक है, डेवलपमेंट के अलावा मुझे मोस्टली हर चीज आई टीम से आती है, क्योंकि उसमें मैंने काम किया है। तो हो सकता है कि मैं कभी कभी आंसर नहीं दे पाऊँ, लेकिन मोस्टली आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। जो भी डाउट से मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान रखिए, जो कुछ भी होता है, आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आती है, तो गूगल पे बहुत सारे साइट्स हैं जो आपको फर्स्ट लिंक में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर मिल ही जाने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि हर साइट में एंड में कुछ न कुछ लिखा रहता है, और जब तक आप एंड टू एंड नहीं पढ़ोगे उस साइट का ब्लॉग, आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज कीप इन माइंड कि गूगल का हर ब्लॉग सही नहीं है, और आपको नहीं लगता है तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। आप सर्च करो कुछ और कुछ और मिलेगा, आप उसको फॉलो करते करते जाओगे, पूरी तरह से सिस्टम की हो जाती है। वैसे मैं देख चुका हूँ, पिछले जो बंदे ज्वाइन किए थे उन लोगों ने बहुत बार ऐसा किया है, और फिर मुझे सब कुछ रोल बैक करना पड़ता था। और सेकंड बात ये कि लोग सच नहीं बताते हैं। सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। लोग बोलता है कि कलयुग है, और कलयुग में सच बोलोगे तो जिंदा नहीं रहोगे या फिर खुश नहीं रहोगे, तो उनकी धारणा है। आई डोंट केयर। ठीक है, हमने वही किया है जो हमारे दिल ने बोला है, हमारे कर्म ने बोला है। बिना डीबी हमने वही चीज बोला है, और हम उस कर्म को लेके आपके सामने खड़े हैं। कि डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज रीच टू मी फर्स्ट। हमारी कंपनी को मल्टीपल टाइम ये बात कही है, बिफोर गोइंग टू गूगल प्लीज रीच टू मी फर्स्ट। अगर मैं नहीं करता हूँ देन आप मुझे बोलो कि मैंने नहीं किया है, बट मोस्टली आई एम ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू। ओके, तो आप जो कुछ भी हो, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ कलीग, डोंट थिंक कि मैं सीनियर हूँ और मैं जूनियर। सीनियर देखो तो मैं आपसे बहुत आगे हूँ, मतलब देखा 10-12 साल का डिफरेंस होगा, मोस्टली ज्यादा ही हो सकता है। तो फिर तो गैप फील नहीं होगा ये, अगर आप देखोगे इस तरह से तो वही फील नहीं होगी। तो गैप को फील करो और बी फ्रेंड, और जो भी पूछना है, लेकिन उसका टाइम होता है, लेकिन और टाइम में आप रात के 10 बजे सुबह के 5 बजे पिंग करोगे और आप सोचोगे कि मैं फोन करूँ, तो नहीं। 9:30 to 6:30 मैं अवेलेबल रहता हूँ। आपको जितना ही पूछना है, जितनी बार पूछना है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको भी अपने तरफ से एफर्ट लगानी पड़ेगी कि आप सीखना चाहते हैं, ना कि टाइम पास करना चाहते हैं। मैं तो बहुत लोग ज्वाइन किए पिछले 1.5-2 सालों में, जस्ट मतलब इतने बड़े कंपनी में 4 या 5 बंदे आज भी मेरे साथ है जो सीखते रहते हैं, और बहुत सारी चीजें जो मैं करते रहता हूँ तो मैं ऑफिशियल नहीं कर सकता आपको, दैट इज डिफरेंट थिंग। इसी तरह का आपको हेल्प चाहिए डेटाबेस के लिए, आप मुझे रीच कर सकते हैं और बोल सकते हैं, और आप चाहे तो फेसबुक भी देख सकते हैं, लिंक्डइन भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत लोग हैं जो मेरे को अननोन भी है, जैसे 10 फ्रेंड होते हैं, तो यूएस में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। एवरीवन पिंग मी व्हेन दे फेस द इशू, तो आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व दैट इशू एज पर माई एक्सपीरियंस। अगर नहीं होता है तो हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई अगर सर्विस नहीं मिल रही है एप्लीकेशन से, हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन क्या निकालना है। सपोज जिसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप डीबीए नहीं हो, आप डेवलपर हो, आपको डेटा खाली डालने से मतलब है और डेटा रीड करने से मतलब है। फीचर्स तो देखना मेरा काम है कि भाई कैसे कहाँ प्रोवाइड कराना है। तो आप ध्यान रखिए, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, बहुत लोगों ने सुना ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आपको प्रॉपर डेवलपर बनना है, अगर प्रोग्रामर बनना है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बनना है, या और कुछ भी बनना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अभी से। और ये सब बेस है, जो भी मैंने बताया ना, ये बेस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डेटाबेस डेवलपमेंट का। नॉर्मलाइजेशन लेके देखो, या फिर आप ये कोड रूल देखो, या फिर हार्डवेयर के बारे में जानना है, तो ये सब बेसिक है। अगर आप ये चीज भूल गए तो आप कभी भी कोई एप्लीकेशन बढ़िया डेवलप नहीं कर पाओगे, तो आप फटता ही रहेगा। जैसे आपने विंडो विस्टा का नाम सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे गंदी एप्लीकेशन थी जो नहीं चला, 3 महीने भी मार्केट में नहीं चला। ठीक है, उसकी लाइसेंस बिकी ही नहीं। तो होता है, ये सब डेवलपर की गलती की वजह से होता है। जल्दी जल्दी में हम कुछ रिलीज कर देते हैं और फटते चला जाता है, और कंट्रोल नहीं होता, फिर कस्टमर उब जाते हैं हमसे।
तो कुछ भी आप डेवलप करते हैं ना, एकदम स्मूथली डेवलप कीजिए और हर फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि भाई इतना बढ़िया मैं लिख दूं कि मेरे को कोई यूज ना होता है। टाइम लगता है, कोई परफेक्ट नहीं है कि टाइम में कोई बढ़िया एक्सपर्ट नहीं हो जाता है सिंगल डे में और कपल ऑफ मंथ में, थोड़ा टाइम लगता है, आपका भी टाइम लगने वाला है मुझे पता है, लेकिन ध्यान दीजिए, टाइम पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके ऊपर मैनेजर बैठा हुआ है, आपको मॉनिटर कर रहा है, एचआर है मॉनिटर कर रहा है, तो कितने आप झलासी मारोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, आखिर तो पकड़े ही जाओगे। तो आप लोगों का फिर ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग भी होती है, कुछ एग्जाम्स होते हैं कंफर्मेशन से पहले, तो आपको ओएस लेवल, एप्लीकेशन लेवल एग्जाम देनी पड़ेगी। जिसने पास नहीं किया भैया आप तो पता ही कि क्या होता है, फिर निहाल हो जाओगे। तो जो भी आपने टाइम पास कॉलेज में किए 4 साल, वो सब भूल जाइए, कॉलेज की लाइफ खत्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई प्रोफेशनल लाइफ, और ये बहुत ही टफ है साल के आगे कुछ सालों तक, तब तक आप प्रॉपर एक डेवलपर नहीं बन जाते, क्योंकि फ्रेशर पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है और नहीं कोई नया प्रोजेक्ट देगा, तो आप प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट रह जाओगे, हर मुझे प्रोजेक्ट दे दो, प्रोजेक्ट लेकिन मिलेगा नहीं। सैलरी तो मिलेगी, हर कंपनी में मिलती है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब आपका ग्रोथ रुक जाता है उस टाइम। तो प्रोजेक्ट लेने के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए और थोड़े से बोलने आना चाहिए। मुझे बोलने नहीं आता है, मैं तो सच बोलता हूँ, मुझे बोलने आता ही नहीं है, जस्ट मैं टेक्निकल बंदा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने अकेला ही काम किया और मुझे कोई सर्कल नहीं मिलता जिससे मैं अपने आप को इंटरेक्ट करूँ या पर्सनली सोसाइटी में जैसे भी हो। तो मेरे अंदर ये ड्रॉबैक है, एक्सेप्ट दैट। अगर आपको मेरी बात बुरी भी लगती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ध्यान रखिए कि ये मेरा सेकंड लास्ट सेशन है, नेक्स्ट नॉट लाइक लास्ट लूंगा, थर्सडे को आई थिंक। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। बोलने का मेरा मेन मोटो यही है कि जो गलतियां पास्ट में हो चुकी हैं आप भूलिए और आज से नया सेशन स्टार्ट कीजिए अपने लाइफ का, जो एक्साइटेड हो और जिसमें आपको करने में मजा भी आए। ऐसे सब लोग कमा रहे, कोई भूखा नहीं मारा दुनिया में, लेकिन कुछ लोग जो कितने एक्सपर्ट हैं जिनका लोग दुनिया में नाम लेते हैं। तो आपको अगर एक्सपर्ट बनना है या फिर ऐसे ही बस गाय भैंस की तरह डेवलप होकर निकल लेना है तो इट्स योर चॉइस। तो आज का हम यहीं तक रखेंगे, तो आप देख लीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम अब तक मुझे बताइए, और जो लास्ट सेशन होगा उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे, कैसे हम और भी बेसिक ट्रबल शूटिंग जो करना होगा करेंगे, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे वो देख लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे मैं ब्लॉग डालता हूँ वहाँ पे जो फेल्सफुल जाते हैं और बहुत लोग हैं जो सीख रहे हैं। बेसिकली वो मैं लिखा ही इसलिए कि बस L1 और फ्रेशर को सीखने के लिए टॉपिक ऐसे ही स्टार्ट होता है, दिस इज फॉर फ्रेशर्स एंड L1। तो आपको हो सकता है बेनिफिट हो तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, और बाकी चीजें हो तो आप मेरे से बात कीजिए, अभी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप काम कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और आप ध्यान रखेंगे। ओके देन, थैंक यू। या कुछ बोल रहे थे कोई अभी?